Namaste students, this is JVN Brijesh Kumar Yadav, Faculty of Education and Methodology, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Students, I welcome to all of you in my digital class. Students, today I have prepared this lecture for MSc first semester Botany. Subject name is Microbiology. Topic is sterilization. Students, before this class we have studied microbial diversity. What are those diverse group of microbes such as bacteria, fungi, algae, protozoans. After that we have seen nutrition of those microbes, followed by microbial physiology, life cycle, all those aspects we have seen. After that we have also studied microscopy and स्कैनिंग टेक्निक्स, जिसमें कि हमने देखा माइक्रोस्कोप के बारे में और स्कैनिंग टेक्निक्स के बारे में, कैसे हम सैंपल को स्टेन करते हैं, कैसे माइक्रोस्कोप की सहायता से विजुलाइज करते हैं, कैसे लाइव सेल्स को प्रिपेयर करते हैं, स्पेसिमेंस प्रिपेयर करते हैं, स्कैनिंग, ऑल दोज एस्पेक्ट्स वी हैव सीन in previous lectures. Today we will see what is sterilization, what are those process of sterilization, what are those types of sterilization, along with their examples. Okay, so without delay, let's start with definition. What is sterilization? Sterilization can be defined as any process that effectively kills or eliminates transmissible agents such as fungi, bacteria, viruses, and prions from a surface, equipment, foods, medications, or biological culture medium. Means in sterilization we remove, eliminate, kill all those parasites or pathogenic organisms, चाहे वो फंजाई हो, बैक्टीरिया हो, वायरसेस हो और प्रियॉन्स हो, जिन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से डिजीज होता है, जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, उनको हम एलिमिनेट करते हैं अपने एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट से, फूड से, मेडिकेशन से और बायोलॉजिकल कल्चर मीडियम से. ओके, सो दिस इज वेरी प्रिसाइज एंड कंप्लीट डेफिनेशन. नाउ what are those methods of sterilization? There are various methods of sterilization. First one is physical methods, second is chemical methods. These two methods further divided into different subtypes, sub-methods. In physical method, there are thermal or heat method, radiation method, filtration method. In chemical methods, there are gaseous method. Let's start with physical method in detail. तो इसमें क्या क्या है फिजिकल मेथड्स, उनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे. पहला है हीट स्टेरिलाइजेशन मेथड. हीट स्टेरिलाइजेशन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड रिलायबल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन which involve destruction of enzymes and other essential cell constituents. This method of sterilization can be applied only to the thermostable products, but it can be used for moisture sensitive materials. Dry heat 160 to 1800 degrees Celsius used for sterilization of thermostable products, whereas moist heat 121 to
1340 degree Celsius sterilization used for moisture resistant material. Okay, the efficiency with which heat is able to inactivate microorganisms is depend upon the degree of heat, the exposure time and the presence of water. तो ये एफिशिएंसी जो होती है स्टेरिलाइजेशन करने की, ये डिपेंड करती है 2-3 क्राइटेरिया पे। पहला तो है कि डिग्री ऑफ हीट, कितना आप हीट उसको प्रोवाइड कर रहे हो, कितने समय तक हीट का एक्सपोजर दे रहे हैं, और वहाँ पे वाटर की उपस्थिति, वाटर अवेलेबल है कि नहीं। द एक्शन ऑफ हीट विल बी ड्यू टू इंडक्शन ऑफ lethal chemical events mediated through the action of water and oxygen. Okay, जो हीट का एक्शन होता है ये lethal chemical events के थ्रू होता है। In the presence of water, much lower temperature time exposures are required to kill microbes than in the absence of water. Means अगर उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो लो टेम्परेचर ज़्यादा समय तक एक्सपोज करना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के वो माइक्रोब्स किल होंगे, अदरवाइज दे वोंट किल। नेक्स्ट, थर्मल मेथड और हीट मेथड। ओके, इसमें थर्मल मेथड इंक्लूड्स ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन एंड मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, एंड एग्जांपल्स ऑफ ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन are incineration, red heat, flaming and hot air oven. Students, out of these 4 examples of dry heat sterilization, hot air oven is most important, frequently used and most familiar example of dry heat sterilization. You might have seen even in your kitchen hot air oven, simple oven are present, even in lab. Okay, whereas moist heat sterilization method includes dry saturated streams, that is autoclaving. Second is boiling water or steam at atmospheric pressure. Third one is hot water below boiling points. Okay, now dry heat sterilization, it implies high temperature in the range of 160 to 180. Students, please remember this range of temperature, even particular figure, and requires exposure time up to 2 hours depending upon the temperature implied. The benefit of dry heat includes good permeability, penetrability and non-corrosive nature, which makes it applicable for sterilizing glassware, metal surgical instruments. It is also used for sterilizing non-aqueous thermostable liquids and thermostable powders. Means culture media can be sterilized. Okay, और जो ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन है इसका रेंज होता है 160 डिग्री टू 180 डिग्री फॉर 2 आवर्स। स्टूडेंट्स, आपको ये रेंज और ये फिगर्स याद करने होंगे। ड्राई हीट डिस्ट्रॉयज बैक्टीरियल इंडोटॉक्सिन्स और पायरोजेंस विच आर डिफिकल्ट टू एलिमिनेट बाय अदर मीन्स, एंड दिस प्रॉपर्टी मेक्स इट एप्लीकेबल फॉर स्टेरिलाइजिंग ग्लास बॉटल्स विच आर to be filled aseptically. Means ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन का उपयोग मोस्टली इंडोटॉक्सिन को डिस्ट्रक्शन करने में होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडोटॉक्सिन्स आर द प्रोड्यूस्ड बाय इंडोस्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया, ओके, जो कि अदर मेथड से एलिमिनेट करने में डिफ़िकल्टी होती है, वो यहाँ पे एलिमिनेट या स्टेरिलाइज हो जाता है। इसलिए यह मेथड बहुत ही उपयोगी है। अगला है मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ
steam in the range of 121 to 134 degree. Steam under pressure is used to generate high temperature needed for sterilization. Saturated steam act as a effective sterilizing agent. तो इसमें क्या होता है, जो स्टीम निकलती है उसका उपयोग होता है एज ए स्टेरिलाइजिंग एजेंट, ठीक है, जिसका हीट रेंज होता है 121 टू 134 डिग्री. स्टूडेंट्स, दिस इज द इमेज ऑफ हॉट एयर ओवन. फर्स्ट वन इज क्लोज्ड व्यू, सेकेंड इज oven view. It is just like almirah, but there is a connection for rods, electricity and other parameters. This is very important and used in the lab of microbiology, even plant tissue culture, for sterilization of media, culture media, all the glasswares, equipments. For this purpose this is used. Next one is autoclave. Autoclaves use pressurized steam to destroy microorganisms and are the most dependable system available for the decontamination of laboratory waste and sterilization of laboratory glasswares, media and reagents. Students, this is very important instrument in the lab of microbiology, biotechnology, plant tissue culture, even animal tissue culture, because this is used for the sterilization of laboratory glasswares, media, reagents. For efficient heat transfer, steam must flush the air out of the autoclave chamber. Generally, the condition implies are temperature up to 121 to 134 degree for 15 to 20 minutes under 15 IBS pressure, that is bar. Okay, students, you must remember these parameters, exact figures for autoclave, because in examination, even in practical exam, I may ask what are the parameter of autoclaving. Okay, this is the image of autoclave. A typical autoclave, it has different parts, you can go through that. So students, here we'll have to finish this class. In next class, rest of the part of sterilization we will study. Okay, if you have any question, feel free to ask me, or you can drop me in comment box so that I can see and try to resolve those doubts. Thank you very much.